नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीएमके क्लासेस। आज हम यूनिट 8 टैंजिबल एंड इंटैंजिबल हेरिटेज पढ़ेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो बताएगा कि हमारी विरासत सिर्फ पुरानी इमारत या चीजें नहीं, बल्कि वो रंग, स्वाद, नाच और कहानियां भी है जो हमें अपने रूट से जोड़ती है। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे 1. इंट्रोडक्शन, कल्चरल हेरिटेज को डिफाइन करना। टैंजिबल, ताज महल और इंटैंजिबल, होली, क्लासिकल म्यूजिक में फर्क। 2. कल्चरल हेरिटेज, आर्ट, स्पिक मैके जैसे एफर्ट से क्लासिकल आर्ट्स का रिवाइवल। फेस्टिवल्स, होली के पिछले किस्से, प्रहलाद की कहानी से जेंडर डायनामिक्स तक। फूड, कोलकाता बिरयानी में आलू का सच। जीआई टैग वॉर्स, रसगुल्ला, बंगाल वर्सेस ओडिशा। 3. हेरिटेज कंजर्वेशन, यूनेस्को की लिस्ट, कलबेलिया डांस, मुंबई की विक्टोरियन बिल्डिंग्स और कम्युनिटीज का रोल। 4. म्यूजियम्स, पुरानी आर्टिफैक्ट से आगे बढ़कर लाइव परफॉर्मेंसेस, डिजिटल स्टोरी टेलिंग। 5. समरी, हेरिटेज का फ्यूचर, टूरिज्म को कैसे कनेक्ट करें। जब आप जानेंगे कि एक प्लेट बिरयानी या होली के रंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि 500 साल पूरी हिस्ट्री का मिरर है, तो आप बोलेगा यह हेरिटेज तो लिविंग टेक्स्ट बुक है। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। चलो पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, चलो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन को पॉइंट बाय पॉइंट, सीधे शब्दों में। 1. हेरिटेज क्या है? ये हमारी विरासत है जो हम अपने एंसेस्टर्स, पूर्वज से इनहेरिट करते हैं। एग्जाम्पल, ताज महल देखने में आता है वर्सेस होली का गीत सिर्फ फील किया जा सकता है। 2 टाइप्स ऑफ हेरिटेज। टैंजिबल, छू सकते हो, बिल्डिंग्स, कुतुब मीनार, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स। इंटैंजिबल, छू नहीं सकते, फेस्टिवल्स, दिवाली, डांस, भरतनाट्यम, रेसिपीज, दम बिरयानी। 3. वाई स्टडी दिस? आइडेंटिटी, हम जैसे इंडियंस के लिए ताज महल सिर्फ बिल्डिंग नहीं, हम है का प्राइड है। टूरिज्म, लोग आते हैं इंडिया सिर्फ ताज देखने नहीं बल्कि होली खेलने भी। 4. केस स्टडीज का रोल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। 8. स्पिक मके क्लासिकल म्यूजिक को स्कूल्स तक कैसे ले जा रहा है। फूड, रसगुल्ला पे बंगाल, ओडिशा की लड़ाई जीआई टैग के लिए। 5. बिग आइडिया, हेरिटेज सिर्फ पुरानी चीज नहीं बल्कि वो लिविंग कल्चर है जो हम रोज सेलिब्रेट करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं कल्चरल हेरिटेज की तरफ, जहां हम होली के रंगों और बिरयानी के स्वाद का रियल कनेक्शन एक्सप्लोर करेंगे। कल्चरल हेरिटेज। 1. आर्ट एज कल्चरल हेरिटेज, क्लासिकल आर्ट्स, हिंदुस्तानी म्यूजिक, डांस। Organizations like SPIC MACAY promote classical arts in schools, colleges. Ustad Amjad Ali Khan says, Indian classical music moves like an elephant, slow, deep, needs patience to understand. INTACH works to restore old art forms, paintings, sculptures. Teach youth through workshops and digital media, YouTube, blogs. 2. Festivals, living heritage. Story of Holi, based on ancient tale of Prahlad, good, versus Hiranyakashipu, evil. Lathmar Holi in Barsana, women playfully beat men with sticks, challenges gender norms. Big tourist attraction, foreigners love playing with colors. Chhau dance, Jharkhand, Odisha. Martial dance showing epics like Mahabharat. UNESCO declared it intangible heritage. Now globally famous. 3. Food equals edible history. Kolkata Biryani's secret. Nawab Wajid Ali Shah added potatoes instead of meat during financial crisis. Now its signature. Rasgulla War, Bengal versus Odisha. Bengal, we invented it in 1868. Odisha, our Jagannath temple has it since 12th century. Court gave GI tag to Bengal, July 30th equals Rasgulla Day. Anthropology fact. Food reflects history. Example, Rajputs ate meat, Jains vegetarian, and rituals. Prasad in temples. Why it matters? These aren't just fun traditions. They're living history books telling who we are. Next we'll see how UNESCO saves dying arts like Kalbelia dance. Heritage conservation and preservation. 1. What is heritage conservation? Goal. Protect both physical monuments and non-physical dances, songs, heritage for future generations. UNESCO's role. Lists global heritage sites, example, Taj Mahal, and intangible arts, example,
Kalbelia dance. 2003 convention focused on saving intangible heritage like folk songs, recipes, and rituals. Though, key concepts: A. Tangible versus intangible heritage. Tangible, touchable. Taj Mahal, old buildings, protected by ASI, Archaeological Survey of India. Intangible, untouchable. Holi, classical music. Biryani recipe, saved by communities, NGOs. B. Safeguarding equals keeping traditions alive. Examples: recording dying folk songs, example, Rajasthan's Manganiyar music. Teaching kids traditional crafts, example, Banarsi sari weaving. Tech help, using videos, apps to document oral histories. Teen, real-world cases. A. Kalbelia dance, Rajasthan. Background: snake charmers, dance, almost extinct. UNESCO saved it, listed in 2010, now performed globally. Side effect: became commercial, no longer ritual, but a show. B. Mumbai's Art Deco buildings. Why special? Mix of Victorian and Indian styles. UNESCO tag, 2018. Made them tourist hotspots. More funds for upkeep. See temple dances, like Bharatanatyam. History: banned in 1947, seen as vulgar. Revival: dancers like Rukmini Devi repackaged it as classical art. Challenges in conservation. Problem 1. Locals ignored. No ownership, example, if people can't profit, they won't protect. Problem 2. Over-commercialization, example, Kalbelia dance losing its original meaning. Solution: involve communities, example, train weavers to sell crafts to tourists. Government schemes like Intangible Heritage Fund since 2013. 5. Why should you care? Tourism boost. Heritage sites equals jobs, guides, hotels, shops. Identity: losing traditions equals losing Indianness, example, no Holi. No shared joy. Fun fact: even dosa recipes can be heritage. UNESCO protects Korean kimchi making. Next we study how museums use VR to showcase intangible heritage. Museums as cultural heritage. 1. Museums equals time machines. Not just about old objects. They preserve stories behind them. Example, a simple tribal mask in museum tells about rituals, beliefs of that community. Though, big change in last 20 years. Old museums only cared about collecting, showing artifacts, boring glass boxes. New museums focus on experience videos, music, live performances, like a show. Teen, how museums save intangible heritage. Record folk songs, dances that are disappearing. Example, London's Theatre Museum keeps recordings of 100-year-old plays. Use technology, AR/VR to show how ancient dances were performed. Problems museums face. Authenticity issue. Is the displayed culture real or just for tourists? Example, some tribal artifacts lose meaning when taken from original location. 5. Cool new museum types. Community museums. Locals themselves curate, like Papa Tongarewa in New Zealand. Digital museums. Preserve traditions online for future generations. Living museums. Artists perform live, example, Kalbelia dancers in Rajasthan museums. Key message: modern museums aren't just don't touch places. They're interactive culture hubs where heritage comes alive. Summary: 1. Key takeaways from the unit. Heritage is more than buildings. Not just Taj Mahal, tangible, but also Holi, classical music, food recipes, intangible, matter. Example, Rasgulla isn't just sweet, it's Bengal versus Odisha's 200-year food war. Though, how heritage boosts tourism. Living experiences more than just sightseeing. Tourists now want to play Holi, learn Kathak, taste authentic biryani. Not just take photos. Example, Chhau dance workshops in Orissa attract more visitors than museums. Teen, conservation challenges. Dying arts need protection. Kalbelia dance, Rajasthan, was fading until UNESCO saved it. Now performers earn through tourism. Problem: some traditions become too commercial. Example, temple dances turn stage shows. Role of communities or tech. Locals equals heritage heroes. Mumbai's Art Deco buildings survived because residents fought to preserve them. Tech help. YouTube, Instagram now teach classical music to Gen Z. Example, SPIC MACAY's online concerts.
अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच IGNOU related contents. Thank you.